Good morning, students. Today we will learn an important grammar topic, that is parts of speech. Uh, this lesson is very important so far as our English grammar is concerned. So English ପାଇଁ a topic टा बहुत important एडा होची हमरो fundamental. So in this lesson I will give you a brief, you can say introduction to the parts of speech, and in the following classes, so we will learn more in details about each part of speech. So first thing which is parts of speech कौन? So parts of speech किसी नहीं. So words can be divided into different parts according to the way they work in sentences. So sentence रे गोटे word को भलिया व्यवहार होउची ताकू आधार करिकिना words गुडी को आठ भाग रे विभक्त करा जाय अछि. So words have been divided into 8 parts known as parts of speech. So parts of speech गुडी को कौन हला? So they are nouns, adjectives, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So आमे गोटे गोटे को भलारे पढिबा, गोटे गोटे को भलारे पढि कि बुझिबा को चेष्टा करिबा. Noun कौन? So a noun is a word which is used for the name of a person, place, thing or an idea. For example, Amit, Raigada, Mahanadi are nouns. Okay, like marker, blackboard, whiteboard, chairs, tables, okay, maps. These are nouns. Something हम यदि कहेगा, for example, so she is a cricketer. She is a cricketer. So cricketer होची गोटे noun. बुझी होची cricketer होची गोटे noun. काहे के एटा गोटे ना को बुझी होची. बुझी परलो आमे कहि परिबा he is a teacher. He is a teacher. Mr. Das is a teacher. Teacher गोटे profession रो ना. बुझी परछो. So teaching is a profession. सेमती आमे जते सब ना को बुझोची ताको आमे nouns बोली कहूछु. Then आछि adjectives. So adjective कोन? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. So जेउ पदटी जेउ पदटी हमको noun विषय रे अधिक सूचना दी. So noun ऊपरे अधिक सूचना दी ताकू आमे adjectives बोली कहू. जेमति कि beauty, costly, funny, bright एगुडी को हला सब एडजेक्टिव्स रो एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमें नहीं कोई परिबा अमित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. एटी स्टूडेंट होची गोटे नाउन. को प्रकार रो स्टूडेंट ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो इंटेलिजेंट वर्ड होची गोटे एडजेक्टिव. सेमिति प्रोनाउन कोन? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड in place of a noun. जो वर्ड टा गोटे नाउन बदल रे व्यवहृत हुए ताको हमें प्रोनाउन बोली कहबा. ओडिया रे हम जेंति सर्वनाम कहूछु. एग्जांपल आई, यू, ही, सी एगुडी कहला सब एग्जांपल. गोटे एग्जांपल दे कि मु तुमको बुझौछि केमति हमें प्रोनाउन को यूज कर परिबा. सो Amit is my best friend. Amit is my best friend. Amit's father is a bank manager. So ମୁଁ एटी दीटा जगह सेंटेंस लिखली. गोटे लिखली Amit is my best friend. सेकंड सेंटेंस होची Amit's father is a bank manager. Amit जगह रे आमे his father is a bank manager लगे परिबा बा यूज करि परिबा. तो his का गोटे कोन हे परिबो ना प्रोनाउन हे परिबो. सेमिति आमे जदी अमित तो आउट सेंटेंस जदी नै परिबा अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड.
Okay, so Amit loves to play cricket. तो अमित जगह रे हमें ही loves to play cricket. You know, next sentence or next parts of speech that is adverb. Adverb कौन करे? Sorry, verb. Verb कौन? A verb, a verb is a word that tells us something, is happening, or it tells us that something exists. So कौन कहा को हमें verb बोली कहबा? So जो पद गोटे कार्य को सूचौथबो आमे जते सब एक्शन वर्ड्स गुडी को अछि से सब गुडी को हला verbs जेमति sing, dance, play, cry, believe ए सब गुडी को होछि verbs. And adverb कहा को कहबा? An adverb is a word that describes a verb or an adjective or another adverb. So जेमति sometimes, lazily, carefully, carelessly, often, these are adverbs. Okay, सेमति next होची preposition. Preposition कौन? Preposition is a word that shows relationship between a noun, pronoun and other words in a sentence. For example, जेमते हमें कोई परिबा को गुडी को preposition जेमते हमें कोई परिबा beneath, under, on, in, at ए गुडी को सब होची preposition. So my friend is good at mathematics. So my friend is good at mathematics. So at ता हला गोटे preposition. सेमिति conjunction कहा को कहबा? A conjunction is a word that joins words, phrases or clauses in a sentence. For example, आमे conjunction गुडी कर example but, and, so, not only but also etc. बुझियोछि he worked hard but could not secure more than 70% of marks in the exam. से कठिन परिश्रम कले किंतु से परीक्षा रे शतकड़ा 70 रु अधिक मार्क रखि पारले नाही. Okay, so किंतु टा हला गोटे conjunction and the last one is interjection. So interjection कौन? An interjection is a word that that is used to express a sudden emotion. Okay, you can say a surprise he pare, it could be a pain, it could be a pleasure. जेमते हमें कोचु वाह what a shot एटी वाह हला गोटे होची कोन ना interjection. Thank you very much. Have a great day. Good morning, students. So today we will learn an important grammar topic, that is parts of speech. This lesson is very important so far as our English grammar is concerned. So English पाई ए topic टा बहुत important एडा होची हमरो fundamental. So in this lesson I will give you a brief you can say introduction to the parts of speech, and in the following classes so we will learn more in details about each part of speech. So first thing which is parts of speech कौन? So parts of speech किछि नहीं. So words can be divided into different parts according to the way they work in sentences. So sentence रे गोटे word को भलिया व्यवहार होची ताकू आधार करिकिना words गुडी को 8 भाग रे विभक्त करा जाय अछि. So words have been divided into 8 parts known as parts of speech. So parts of speech गुडी को कौन हला? So they are nouns, adjectives, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So आमे गोटे गोटे को भला रे पढिबा.
गोटे गोटे को भलारे पढ़ी कि बुझिकिना बुझिबा को चेष्टा करबा नाउन कोड सो ए नाउन इज ए वर्ड which is used for the name of a person, place, thing or an idea. For example, Amit, Raigada, Mahanadi are nouns. Okay, like marker, blackboard, whiteboard, chairs, tables, okay, maps. These are nouns. Something हम यदि कहबा for example, so she is a cricketer. She is a cricketer. So cricketer होची गोटे noun. बुझौची cricketer होची गोटे noun. काहे के एटा गोटे ना को बुझौची. बुझि परलो आमे कहि परबा he is a teacher. He is a teacher. Mr. Das is a teacher. Teacher गोटे प्रोफेशन रो ना बुझि परछो. So teaching is a profession. सेमती आमे जते सब ना को बुझौची ताको हमें नाउन्स बोली कहूछु. देन आछि एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव कोन? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. So जेउ पदटी जेउ शब्दटी जेउ पदटी हमको नाउन विषय रे अधिक सूचना दी. सो नाउन ऊपर अधिक सूचना दी ताकू आमे एडजेक्टिव्स बोली कहू. जेमति कि ब्यूटी, कॉस्टली, फनी, ब्राइट एगुडी को हला सब एडजेक्टिव्स रो एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आमे नै कहि परबा अमित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. एटी स्टूडेंट होची गोटे नाउन. को प्रकार रो स्टूडेंट ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो इंटेलिजेंट वर्ड होची गोटे एडजेक्टिव. सेमिति pronoun कोण? a pronoun is a word which is used in place of a noun. जो वर्ड ता गोटे नाउन बदल रे व्यवहृत हुए ताको हमें प्रोनाउन बोली कहबा. ओडिया रे हम जेंति सर्वनाम कहूछु. एग्जांपल आई, यू, ही, सी एगुडी कहला सब एग्जांपल. गोटे एग्जांपल देके मु तुमको बुझौची केमती हमें प्रोनाउन को यूज कर परिबा. सो अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड. अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड. अमित's father is a bank manager. सो मुएटी दीटे जगह सेंटेंस लिखली. गोटे लिखली अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड. सेकंड सेंटेंस होची अमित's father is a bank manager. अमित जगह रे आमे his father is a bank manager लगे परिबा बा यूज करि परिबा. तो his का गोटे कोन हे परिबो ना प्रोनाउन हे परिबो. सेमिति आमे जदी अमित तो आउट सेंटेंस जदी नै परिबा अमित is my best friend. ओके, सो अमित loves to play cricket. तो अमित जगह रे आमे he loves to play cricket. You know, next sentence or next parts of speech that is adverb. Adverb कौन करी? Sorry, verb कौन? A verb, a verb is a word that tells us something, is happening or it tells us that something exists. So कौन? कहाँ को हमें verb बोली कहबा? So जो पद गोटे कार्य को सूचौथबो. हमें जते सब एक्शन वर्ड्स गुडी को अछि से सब गुडी को हला verbs. जेमति sing, dance, play, cry, believe ए सब गुडी को होची verbs. And adverb कहाको कहबा? An adverb is a word that describes a verb or an adjective or another adverb. So जेमति sometimes, lazily, carefully, carelessly, often, these are adverbs. Okay, सेमती नेक्स्ट होची preposition. Preposition कौन? Preposition is a word that shows relationship between a noun, pronoun and other words in a sentence. For example, जेते हमें कोई परिवार को गुडी को preposition
जेमते हमें कहि परिबा beneath, under, on, in, at एगुडी को सब होची preposition. So my friend is good at mathematics. So my friend is good at mathematics. So at ता हला गोटे preposition. सेमिति conjunction कहा को कहबा a conjunction is a word that joins words, phrases or clauses in a sentence. For example, आमे conjunction गुडी कर example but, and, so, not only but also etc. बुझियोची he worked hard but could not secure more than 70% of marks in the exam. से कठिन परिश्रम कले किंतु से परीक्षा रे शतकड़ा 70 रु अधिक मार्क रखि पारले नाही. ओके, सो किंतु टा हला गोटे कंजक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. सो इंटरजेक्शन कोन? An interjection is a word that that is used to express a certain emotion. Okay, you can say a surprise he pare, it could be a pain, it could be a pleasure. जेमते हमें कोचु वाह what a shot. एटी वाह हला गोटे होची कोन ना इंटरजेक्शन. Thank you very much. Have a great day.